So insulin it was isolated from the pancreatic extract. Pancreas जो है उसका extract से insulin isolate किया था. Insulin was extracted from the insulin was isolated from the extract of pancreas, human pancreatic extract. So it is produced by the beta cells of Langerhans and it was isolated first time by Benting and Best. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. In 1921, Benting and Best isolated the insulin first time in the form of extract. Now in the crystalline form it was first time isolated by in the crystalline form insulin was that insulin was first time isolated in the crystalline form by Abel in 1930. First time insulin को किसने डिस्कवर किया? Discovery of insulin goes to the Benting and Best in 1921. They extracted the insulin first time in by the from the pancreatic extract. Pancreas का extract था उसमें से इन्होंने insulin extract किया था Benting and Best ने. But in the crystalline form Abel ने in 1930 in the Abel isolated in the crystalline. Now insulin is nothing but the polypeptide. Insulin क्या है? It is a hormone. Hormone means it is a peptide in nature. Polypeptide with the 6,000 Dalton molecular weight and it consists of two polypeptide chain. इसमें दो polypeptide chain होता है. Chain A has a 21 amino acid and chain B has a 30 amino acids. So total 51 amino acids. You have to remember. So insulin has a 51 amino acids. Chain A has a 21. Chain B has a 30. They used to ask question on this. Okay. Now both chains are joined together by disulfide bond. Both chains, chain A, chain B, they are joined together by disulfide bond, which is very important for biological activity, essential for biological activity. Okay. So pork insulin will differ from human insulin just by one amino acid and beef insulin will differ from human insulin by 3 amino acids. ठीक है. pork insulin एक amino acid से अलग है, मतलब pork insulin में एक amino acid ज़्यादा है और beef insulin में वो synthesis, storage and release. So islets of Langerhans of pancreas will have different kind of cells. Alpha cell will secrete glucagon, beta cell will secrete insulin, delta cell will secrete somatostatin and PP cell or F cell will secrete pancreatic polypeptide. We have already seen 2 to 3 times. Now insulin is synthesized in the beta cells of Langerhans from the precursor polypeptide. Insulin के लिए भी एक precursor polypeptide already ready made है. So it is known as a pre-pro insulin. It is a precursor polypeptide for insulin. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया. Insulin is synthesized from which precursor polypeptide? So pre-pro insulin. Pre-pro insulin in from that pre-pro insulin some amino acids are cleaved and then pro insulin and from pro insulin insulin. This pre-pro insulin is converted into pro insulin, which is pro insulin is also active but it is less active biologically, okay, than insulin, and then insulin is made from pro insulin. So insulin is synthesized and stored in the granules of beta cells of Langerhans and it is released in the repeated pulses. Repeated pulses. जैसे मोटर चालू होता है आपको पानी पानी आता है तो बोर चल गया मोटर में पानी आता है जो वो कैसे स्ट्रीमलाइन आता है मतलब फ्लो कंटिन्यूस होता है वो फ्लो कंटिन्यूस होता है बट पल्सेटाइल फ्लो मतलब क्या होता है ना पुराने जमाने का आशिक अगर हो आप पुराने जमाने के आशिक क्या करते थे पुराने जमाने का आशिक करते थे बोल तुम मुझसे प्यार करती है नहीं नहीं ब्लेड लेके हाथ में बोल तो प्यार करती है नहीं नहीं बोलो तो कलाई काटते थे अगर कलाई काट दी तो वहां पे देखो जैसे ब्लड फ्लो कैसे आता है ब्लड फ्लो कंटिन्यूस नहीं आता मतलब कट हो गया तो ऐसा पंप जैसा फोर्सफुली नहीं आता सब पल्स में आता है पल्स ठीक है पल्स टाइप मतलब जैसे हार्ट बीट आपका मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ओके सो कॉन्टैक्ट हो गया हार्ट तो ब्लड जल्दी निकलता है बाहर रिलैक्स हो गया तो ब्लड नहीं आता सो पल्स में आता है पल्स so pulsatile release of insulin is there so continuous release is not there so it is released in the repeated pulses into circulation okay storage of insulin is increased by zinc is very important zinc जो ions होते हैं zinc ion so it is required for the insulin storage okay then secretion is regulated by hormonal neuronal mechanism insulin का secretion कौन regulate होता है it is regulated by chemical then hormonal and neuronal mechanism there are 3 mechanisms to regulate the insulin release तो कैसे chemical hormonal and neuronal कैसे होगा for example hormonal कैसे जैसे मैंने बोला है glucagon जैसे chemical पहले chemical देख लीजिए chemical मत if there is an increase in the glucose क्या है it is a chemical so if there is an increased glucose in the body so chemical control there is a release of insulin chemical control
हार्मोनल कैसे, if there is a हार्मोनल कैसे, so corticosteroids, corticotropic hormone, ACTH, thyroxine hormone, so it will increase the release of insulin. So hormonal control. न्यूरोनल कंट्रोल कैसे, जस्ट 10 मिनट पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया. So if adrenaline is released, noradrenaline is released, so it will increase the it will inhibit the insulin release. Okay, so neuronal mechanism, hormonal, chemical and neuronal. Beta cells will have glucose sensing mechanism, dependent on the entry of glucose into the cell. जैसे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है तो पैंक्रियाटिक आर्टरी में बढ़ेगा और वही ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर जाएगा. सो इट हैज अ सेंसिंग मैकेनिज्म, इट विल इंक्रीज द, जैसे 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 ये बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा तो वहां पे पोटेशियम डिपेंडेंट केटीपी चैनल होता है. सो वो डीपोलराइज करता है एंड उसके बाद में डीपोलराइजेशन होने के बाद में phosphorylation of protein and all that, and there is the release of insulin by the exocytosis. We'll see it now. Because transporters होता है GULT1. What is the half life of insulin? 5 to 6 minutes. So insulin appears in the plasma only for 6 minutes, 5 to 6 minutes. Half life important, you have to remember. Half life of insulin is only 5 to 6 minutes. मतलब इंसुलिन रिलीज होने के बाद में 5-6 मिनट में अपना काम कर देगा और खत्म, मेटाबोलाइजेशन. नेक्स्ट इज नथिंग बट द factors determining the insulin release. So first factor is glucose. So glucose is very specific and more potent stimulus to insulin release. Glucose जैसे बढ़ गया तो insulin release हो जाएगा. Glucose is very specific. Remember, glucose specific and more potent stimulus to the insulin release. So increase in the glucose concentration at a pancreatic artery leads to release of glucose का concentration बढ़ गया pancreatic artery में. Pancreatic artery मतलब क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तभी जाके पैंक्रियाटिक आर्टरी में ग्लूकोज बढ़ेगा ना. सो ग्लूकोज स्टिमुलेट वन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नोन एज अ GULT2. ग्लूकोज विल स्टिमुलेट GULT2 एंड इनहिबिट करता है ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल. ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन. तो ये डीपोलराइजेशन होता नहीं है, उसमें डीपोलराइजेशन नहीं हुआ, इंसुलिन रिलीज हो जाता है. So again this ATP sensitive potassium channel, they are the targets for anti-diabetic drug. Potassium channel KTP channel blockers आते हैं जैसे metformin वगैरह होता है. So they are ATP sensitive potassium channel blocker in the pancreas. तो वो बाद में देख लेंगे. तो यहाँ पे जस्ट ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज का एंट्री जब होगा उसमें सेल में तो ग्लूकोज विल स्टिमुलेट GULT2 and inhibit the ATP sensitive potassium ion channel responsible for the depolarization of that cell and facilitate the release of insulin. मतलब इंसुलिन जब रिलीज होता है उस कब रिलीज होगा, जब ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर जाएगा तब रिलीज. Now glucose enters in the beta cell by facilitated diffusion via glucose transporters. It is metabolized, transported and metabolized in the beta cells after a series of reaction and ion exchange to the cell. When depolarization cell membrane reaches to a threshold potential, calcium ion brings about the exocytosis the insulin granules from the beta cells. इंसुलिन जब सिंथेसिस होता है पैंक्रियाज में तो लिवर में सिंथेसिस होता है, इंसुलिन पैंक्रियाज में स्टोर होता है. सो इट इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द granules in the pancreatic islets. Whenever there is increase in the glucose level of body, glucose will enter into the pancreatic artery and will enter into pancreatic cells. So it will inhibit this. So it will inhibit the ATP sensitive potassium channel responsible for the depolarization of that cell, which will increase the release of insulin. Now कैसे होता है अंदर? It is insulin will go inside the beta cell by facilitated diffusion through glucose transporters, right? Now after the series of reaction and ion exchange, when depolarization of cell membrane reaches to a threshold potential, okay, the calcium ions released from sarcoplasmic reticulum and that brings about the exocytosis of insulin from granules in the beta cell. That's how insulin is released. Now other factors which determines the insulin release, जैसे amino acid होते हैं, amino acid like arginine, lipids like fatty acids, ketones, non-glucose sugars, they also stimulate the insulin release.
ठीक है. Hypokalemia, less potassium concentration. Less potassium concentration also stimulate the insulin release. Some hormones, gastric hormones like gastrin, secretin, pancreatic enzymes, okay, they especially gastric inhibitory peptide also stimulate the insulin release. ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं. नेक्स्ट इज नथिंग बट द अदर हार्मोन्स. तो दूसरे कौन से हार्मोन है? तो सम हार्मोन्स, ग्लूकागॉन, growth hormone, then thyroxine, ACTH, glucocorticoids also stimulates the insulin release. आपने देखा है ऑलरेडी, इसका वीडियो अभी कल या परसों में अपडेट कर दूँ. देन सोमेटोस्टैटिन विल इनहिबिट द रिलीज. याद रखो, क्वेश्चन आता है ग्लूकागॉन क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, थायरोक्सिन हाइपरग्लाइसेमिक, एसिटिएस हाइपरग्लाइसेमिक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? कुछ दिक्कत है तो मुझे बोलो. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. So remember, mute yourself. There are different hormones. Some hormones are hyperglycemic, some hormones are hypoglycemic. So hormones like glucagon. Glucagon is a hyperglycemic. ये ग्लूकोज को बढ़ा देगा. ग्रोथ हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक, थायरोक्सिन, एसिटिएच, adrenocorticotropic hormone hyperglycemic, glucocorticoids hyperglycemic. We have seen this in the very first lecture, which will stimulate the insulin. But somatostatin will inhibit the insulin release. Somatostatin कहाँ से मिलता है? Somatostatin is produced by somatostatin is produced by delta cells of Langerhans. ठीक है, बोला है ना मैंने, अल्फा सेल will secrete glucagon, beta cell will secrete insulin, delta cell will secrete somatostatin, and pp cell will secrete pancreatic polypeptide. ठीक है, तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल आपका सोमेटोस्टैटिन एंड पीपी सेल. जो पीपी सेल है वो क्या है? pancreatic polypeptide. Now CNS. So brain will also regulate the release of insulin. Brain regulate the insulin release by two mechanisms. First, via release of catecholamines. Catecholamines मतलब क्या? Adrenaline. Okay, noradrenaline. So noradrenaline particularly, it regulate the brain will regulate the insulin release by two mechanisms. First, by releasing the catecholamines. ये adrenaline noradrenaline का release बढ़ देगा. Norepinephrine आपने देखा है. And hypothalamic releasing factor. सेकंड मैकेनिज्म क्या है? सेकंड मैकेनिज्म वाया पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन. रेगुलेट करना मतलब क्या है? कम भी करना है, ज्यादा भी करना है. नहीं तो आप बोलेंगे बढ़ाने का. रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन कम ज्यादा दोनों की. सो ज्यादा कौन करेगा? कैटेकोलामाइन्स. कम कौन करेगा? पैरासिम्पैथिक. वाया एएनएस पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन एंड सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज. एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर इनहिबिट द इंसुलिन रिलीज. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ये जब अपना नर्वस सिस्टम चलेगा, when we will see the nervous system and adrenergic and cholinergic system, at that time I will. Then now drugs. Certain drugs are also has a positive and negative impact on the insulin release. So drugs like xanthine, sulfonylureas stimulate the insulin release, and that's why this sulfonylureas जो आता है, so it is one of the category of drugs used in the diabetes. So drugs like xanthine, sulfonylurea stimulate the insulin release. There are certain drugs like thiazide, diazoxide, phenytoin, they inhibit the insulin release. देखो, जो ड्रग स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज का, वो डायबिटीज में यूजफुल रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल xanthine, sulfonylureas, they stimulate the insulin release. So that's why sulfonylureas is the one of the category of antidiabetic. Thiazides, diazoxide, ठीक है, thiazides, diazoxide, phenytoin, they inhibit the insulin release. So ये क्या करेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया. ये जो ड्रग है हाइपरग्लाइसेमिया करेंगे, क्योंकि ये इनहिबिट करते हैं इंसुलिन को. तो ये ऑब्वियसली क्या करेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया. तो इनका एडवर्स इफेक्ट अभी देखो आप, इनके एडवर्स इफेक्ट में एक एडवर्स इफेक्ट इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. देखो बाद में. Then next is a transport and metabolism of insulin. So insulin circulates in the blood in the okay. Insulin circulates in the free form in the plasma. It is metabolized by liver and kidney and muscle. Insulin is secreted from the pancreas in the monomeric form. Human insulin है original. It is secreted in the form of monomeric form. Monomeric मतलब single unit, which is easily diffusible and metabolized. But therapeutically used insulin preparations, they consist of a tetrameric और hexameric form. बाकी के इंसुलिन प्रिपरेशन है आजकल जो यूज करते हैं वो क्या है? टेट्रामेरिक है या फिर हेक्सामेरिक है. एंड दैट्स व्हाई
these insulin preparation they are longer acting. जो नॉर्मल इंसुलिन है आपका नेटिव इंसुलिन को नेटिव बोलेंगे. नेटिव मतलब ह्यूमन इंसुलिन. ह्यूमन इंसुलिन इज secreted in the form of monomer and it is easily diffusible metabolized. Therapeutically useful insulin preparations they are hexameric or tetrameric. That's why they are longer acting. Okay. Okay. Next we'll see how insulin will act. Okay. Insulin will be released. Insulin will be released. We have already seen in the pharmacology, general pharmacology. So type 3 receptor. Type 3 receptor. कितना type? First type receptor कौन सा होता है? Type 1 होता है आपका ion channel. Type second receptor GPCR. Type 3 kinase linked receptor. So this is a kinase linked receptor. So this insulin receptor is a enzyme linked receptor or kinase tyrosine kinase linked receptor. So insulin receptor, so it has a two parts. So internal part is known as a beta subunit and outer part is known as a alpha subunit. The outer part cell membrane के ऊपर होता है alpha subunit and beta subunit मतलब inside होता है. So insulin when it will be released, it will combine with the insulin receptor and alpha subunit and it will combine at alpha subunit and alpha subunit will stimulate the beta and then inside the cell certain proteins मतलब ये क्या हो सकते हैं enzymes hormone enzymes metabolizing enzymes they are phosphorylated. So phosphorylation of certain protein then it will alter the enzyme activity मतलब enzyme activity कम ज़्यादा करेगा ये. ठीक है मतलब जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम है उनको बढ़ा देगा. जैसे आपका अपन ने देखा है ग्लाइकोलाइसिस में. ठीक है हेक्सोकाइनेज. सो हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय इंसुलिन. ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट वो जो सभी एंजाइम्स हैं मोस्ट ऑफ द कैटालाइटिक एंजाइम्स of the glycolysis Krebs cycle, so their activity is increased by insulin in this way. तो इंसुलिन क्या करता है सेल के ऊपर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर जाके इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा. इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ये. So it will bind to a alpha subunit and form a complex which will then signal will be transmitted to a beta cell. Beta subunit is present in the inside the cell. So it will cause phosphorylation of certain inactive protein. Inactive protein है उसका क्या करेगा phosphorylation. That phosphorylation leads to change in the activity of enzymes. एंजाइम जो इस सेल में जैसे ग्लूकोकाइनेज वगैरह वो एक्टिवेट होते हैं. एक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज. ठीक है जो भी ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम लगते हैं Krebs cycle के लिए एंजाइम लगते हैं so they will be activated altered enzyme activity so that leads to response. There is increase the glucose uptake in the cell and decrease the gluconeogenesis. Right? That is the effect of insulin. Now same thing is described over here. So जैसे इंसुलिन रिसेप्टर है. ठीक है इंसुलिन रिसेप्टर अल्फा सबयूनिट. ठीक है और ये इंसुलिन अल्फा सबयूनिट के साथ में बाइंड होता है और बीटा सबयूनिट इनसाइड सेल होता है. ठीक है एंड दे causes the phosphorylation cascade series of phosphorylation reaction. So activation or inactivation of enzymes. जैसे मैंने बोला enzymes will be activated. जैसे glycolysis के enzymes जो है जैसे आपका hexokinase, glucokinase, ठीक है, aldolase, all these enzymes will be activated. All these enzymes will be activated upon the entry, upon the when this insulin will interact with the receptor. So because of the phosphorylation, ये सब signaling mechanism होता है. And lastly there will be glycolysis and all that. And again gene expression will also be changed. There is an increase in the insulin receptors. So it will act on a DNA AMP kinase, MAP kinase. It will act on a DNA. It will increase the transcription and protein will be synthesized. So that's how insulin will act on the receptor. And so ये uptake कैसे बढ़ेगा? This phosphorylation also stimulate the glucose transporters. So glucose transporters will move on the cell membrane and it will glucose entry in the cell will be there. ठीक है जैसे इंसुलिन बाइंड करता है रिसेप्टर को ये सब सिग्नलिंग मैकेनिज्म चालू होता है phosphorylation cascade. Certain proteins will be phosphorylated and then activation of certain enzymes required for the glycolysis. Okay
ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन ग्लूकोज कहाँ पे है? तो ग्लूकोज को भी बुलाया जाएगा, तो तुम भी आ जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, ग्लूकोज भी सेल के अंदर जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, so it acts on a specific receptor. Insulin act on a specific receptor which are located on the cell membrane. Practically every cell of your body will have insulin receptor. Now insulin receptor are nothing but they are known as a tyrosine kinase linked receptor, type 3 receptor, tyrosine kinase linked receptor. A glycoprotein receptor consists of two extracellular alpha subunit and transmembrane beta subunit, जिसे देखा है outside the cell extracellular क्या है alpha unit, two transmembrane beta unit linked together by disulfide. Now alpha subunit, okay, alpha subunits are the binding sites for the insulin. Binding site क्या है alpha subunit, while beta subunit क्या है, they have tyrosine in protein kinase activity, tyrosine protein kinase activity. Binding of insulin to the alpha subunit induces aggregation and internalization of receptor along with the bound insulin molecule. This activate the beta subunit, which is then phosphorylated into tyrosine residue. This series of phosphorylation cascade of phosphorylation and dephosphorylation, series of phosphorylation and dephosphorylation reaction occurs, which amplifies the signal and results in the stimulation or inhibition, either increase करेगा decrease करेगा क्या, enzyme involved in the metabolic reaction. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के लिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो एंजाइम्स लग रहे उनको एक्टिवेट कर देगा, तभी जाके ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा. तो सेल के अंदर ग्लूकोज लेके क्या फायदा, अगर ग्लाइकोलाइसिस चल नहीं हुआ तो क्या उपयोग है. So basically insulin will increase the uptake of glucose and will cause metabolism of glucose. समझ में आया क्या है मैकेनिज्म? यस और नो, यस और नो, जस्ट टेल मी. देखो यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए इंसुलिन का रिसेप्टर है, दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर. व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन हार्मोन है, क्या करता है, काम क्या है उसका, उसका काम है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर ढकेलना और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, तभी जाके ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा ना. जब तक इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं डालेगा और वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो ग्लूकोज बॉडी का कम कैसे होगा, वो काम क्या किसका है, इंसुलिन का. तो कैसे एक्ट होता है देखो. सो इंसुलिन एक्ट वाया इट्स रिसेप्टर. तो इंसुलिन का रिसेप्टर कौन है, इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं उसको. ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर इंसुलिन का, इंसुलिन रिसेप्टर. तो इट इज अ टाइप ऑफ 3 रिसेप्टर. जो टाइप 4 रिसेप्टर देखे ना आपने, टाइप 1 is known as ion channel, type 2 is known as GPCR, we have already seen. Type 3 is known as a kinase linker, type 4 is known as a intracellular receptor. This is a type 3 receptor. It is a tyrosine kinase linker receptor. So insulin receptor is a tyrosine kinase linker. So how it is? It has a 2 alpha subunit. Okay, it has a 2 alpha subunit on the cell membrane and beta subunit in the ट्रांसमेम्ब्रेन है इंट्रासेलुलर. मतलब अल्फा सबयूनिट सरफेस के ऊपर है, बीटा सबयूनिट अंदर है. ठीक है. नाउ व्हेन इंसुलिन will combine with this receptor, okay, what will happen, it will combine with the alpha subunit and it will activate the beta subunit. So there is internalization. So इसका इफेक्ट क्या होता है, आप इतना इतना मत सोचो, यहाँ पे इतना ही सोचो कि इंसुलिन जब रिसेप्टर के साथ में कंबाइन होता है क्या होता है, there is a phosphorylation, there is a phosphorylation of certain proteins. अंदर के जो प्रोटीन है सेल के अंदर, okay, in certain proteins they are phosphorylated, इसमें phosphate group ऐड किया जाए, and this phosphorylation cascade, phosphorylation dephosphorylation cascade will stimulate, will activate or inhibit certain enzyme. Enzyme कौन से, enzyme responsible for the metabolism of glucose. So it will activate this activate ध्यान में रखो. So this phosphorylation will cause activation of enzyme. एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा कि आओ आप तैयार हो जाओ, दुश्मन आ रहा है तलवार लेके तैयार हो जाओ. दुश्मन कौन है, ग्लूकोज. ग्लूकोज को भी बुलाएगा अंदर, ग्लूकोज को बुलाया, जैसे ग्लूकोज अंदर आएगा एंजाइम्स क्या करेंगे, उसको काट डालेंगे, मतलब मेटाबोलाइज कर देंगे. ठीक है. combination of insulin with the receptor causes the stimulation of this insulin receptor, which will there will be phosphorylation of these internal proteins, and phosphorylation, after phosphorylation that leads to either activation or inactivation of enzyme. Also there are certain generation of secondary messengers also, complex action होता है उसका. You just remember activation of enzymes responsible for the metabolism. Okay, so it will increase the metabolism. Activation of enzyme responsible for the metabolism.
सेम फॉस्फोरिलेशन कैस्केड आल्सो रिजल्ट्स इन द, ये क्या और एक काम करता है क्या कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है सो उनका बढ़ा देते, उनका मतलब उनको भी स्टिमुलेट करता है, so that glucose which is present in the blood that will be taken inside the cell, and ये एंजाइम तो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ से, ये इनको मेटाबोलाइज कर देंगे. नाउ अगेन थर्ड, again this phosphorylation and dephosphorylation cascade also also stimulate certain proteins, also stimulate also increase the production of certain protein by acting on a DNA. DNA में चेंजेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा उसका, बाद में mRNA बनेगा, बाद में ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये भी होता है. तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ में कंबाइन होता है तो अंदर इन्हें जो प्रोटीन प्रेजेंट है सेल के अंदर उसका फॉस्फोरिलेशन होता है. फॉस्फोरिलेशन होने के बाद में वो फॉस्फोरिलेशन एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है? एंजाइम्स. कौन से एंजाइम को? जो ग्लाइकोलाइसिस में लगने वाले एंजाइम्स है, जो क्रेब्स साइकिल में लगने वाले एंजाइम्स है, उनको एक्टिवेट करता है. अगर इनको एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा, वो एंजाइम्स एक्टिवेट होने के बाद में ग्लाइकोलाइसिस चालू कर देंगे. लेकिन ग्लाइकोलाइसिस कब होगा? ग्लूकोज तो चाहिए ना अंदर, तो यही फॉस्फोरिलेशन क्या करता है, ग्लूकोज को भी अंदर लाता है. तो दिस फॉस्फोरिलेशन कैस्केड आल्सो स्टिमुलेट द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ग्लूकोज विल बी, ग्लूकोज एंट्री बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज विल बी एंटर्ड इनटू सेल एंड यू नो दैट दीज आर द एक्टिवेटेड एंजाइम्स. ये क्या करेंगे, फिर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर देंगे. सो दैट इज फिर ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर एटीपी जनरेशन. नाउ समझ में आया? नहीं आया? अभी समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं, ये जीपीसीआर नहीं है, ये काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर रिसेप्टर नहीं है इसका. नहीं नहीं, इसमें भी होता है ना, काइनेज में भी, काइनेज में होता है, जीपीसीआर में नहीं. जीपीसीआर में भी होता है, वो जीपीसीआर में दो तीन मैकेनिज्म है. जीपीसीआर में सेकेंडरी मैसेंजर जनरेशन, फॉस्फोरिलेशन, ये भी होता है. बट ये इंसुलिन रिसेप्टर इज ए फैमिली ऑफ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर. ओके, आप देख लो, वीडियो अवेलेबल है, उसमें भी बोला है. Okay? समझ में आया ये? Okay, same thing I have explained in this slide also, but in this slide it is a description. So it acts on a specific receptors. Insulin acts on a specific receptor located on the cell membrane. So practically every cell will have insulin receptors, right? And they are the receptor which belongs to tyrosine kinase receptor, RTK, मतलब receptor tyrosine kinase. Okay? Then glycoprotein receptor. Okay, a glycoprotein receptor consisting of two extracellular alpha सबयूनिट. ऊपर में एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के सरफेस के ऊपर अल्फा सबयूनिट रहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर अल्फा सबयूनिट एंड टू ट्रांसमेम्ब्रेन बीटा सबयूनिट लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. इसका भी डिस्क्रिप्शन लिख में दिया है, रिसेप्टर में क्या है उसका भी. अल्फा सबयूनिट आर द बाइंडिंग साइट फॉर द इंसुलिन, while beta subunit have tyrosine protein kinase activity. Binding of insulin to the alpha subunit reduces induces aggregation and internalization of receptor along with the bound insulin molecule. This activate the beta subunit which then phosphorylate the tyrosine kinase. वही आपने देखा है, tyrosine kinase को phosphorylate कर देंगे प्रोटीन को. And this series of phosphorylation and phosphorylation and dephosphorylation cascade reaction occurs which amplifies the signals which result in the stimulation or inhibition of certain enzymes required for metabolic reaction. Stimulation होगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम जो लग रहे हैं उसका स्टिमुलेशन होगा, है ना. ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो एंजाइम लग रहे हैं उनका स्टिमुलेशन करके क्या फायदा, उनको इनहिबिशन होगा. समझ रहा है नहीं समझ रहा है? ग्लूकोज का ब्लड में ज्यादा लेवल है, उसका मेटाबोलाइज करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है. इंसुलिन जाके रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा, टायरोसिन काइनेज एक्टिव होगा, वो प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करेगा एंड दिस फॉस्फोरिलेशन विल कॉज एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो एक्टिवेशन किसका होगा, डीएक्टिवेशन किसका होगा? एक्टिवेशन कौन से एंजाइम का होगा? जो ग्लाइकोलाइसिस के लग रहे, ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स लग रहे हैं, जैसे आपका जैसे आपका हेक्सोकाइनेज लग रहा है, ग्लूकोकाइनेज लग रहा है, अल्डोलेज लग रहा है, पायरुवेट काइनेज लग रहा है, ठीक है, उसका सबका एक्टिवेशन हो जाएगा बस. एंड जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए लग रहा है, मतलब नया सिंथेसिस ग्लूकोज क्यों करना है, ऑलरेडी है ना, तो उसका इनहिबिशन हो जाएगा. So, stimulation or inhibition of certain enzymes involved in the metabolic reaction. Then secondary messengers like phosphatidylinisotyl IP3 is generated and mediate the actions of insulin. Insulin act via
various glucose transporter. Already we have seen the various glucose transporter. Now absorption, distribution, metabolism and elimination of this insulin. Insulin is not absorbed orally. Oral insulin is ineffective. क्यों ineffective है? Insulin क्या है? Insulin it is a peptide, है ना? It is a small peptide. It will be destructed in the gastric juice. ये ऐसे में इसका destruction हो जाएगा. That's why insulin orally is ineffective. Effective नहीं है insulin orally. So it must be given by parenteral route with the zinc or protein complex for the slow absorption and longer duration. Subcutaneous absorption of insulin is fastest from the abdominal wall. आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट है वो पेट में इंजेक्शन लेते हैं, पेट में टमी में क्यों लेते हैं? बिकॉज एब्सॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम subcutaneous layer of stomach is highest. Subcutaneous absorption is the fastest from abdominal wall and less rapid from arm. ओके हैंड वगैरह जो है ना वहां से कम एब्सॉर्प्शन होता है. कल एक क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे. एडवर्स रिएक्शंस ऑफ इंसुलिन, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. एडवर्स रिएक्शन ऑफ इंसुलिन मतलब मैकेनिज्म के ऊपर, उसके बाद में इंसुलिन का स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. उसके बाद एडवर्स रिएक्शन. सो एडवर्स रिएक्शन क्या होगा? इंसुलिन का काम ही क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा तो आपको क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया. मिया रिया, सल्लूमिया नहीं और रिया चक्रवर्ती नहीं. मिया रिया मैंने बोला है, मिया मतलब रिलेटेड टू ब्लड, रिया मतलब रिलेटेड टू यूरिन. अगर कुछ ब्लड में बढ़ गया तो मिया लगाएगा, ब्लड में है तो मिया लगाएगा. अगर बढ़ गया तो हाइपर लगाने का, कम हो गया तो हाइपो लगाने का. जैसे हाइपरग्लाइसेमिया. हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या? ब्लड में शुगर बढ़ गया. हाइपोग्लाइसेमिया मतलब क्या? ब्लड में शुगर कम हो गया. अभी देखो ग्लाइकोज यूरिया, तो रिया लगा दिया. ग्लाइकोज यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज है. आया समझ में? रिया मिया. सो एडवर्स रिएक्शन क्या है? बिकॉज एज इट विल cause utilization of glucose, so it will decrease the glucose level. So hypoglycemia is the most common adverse effect. Question आता है most common adverse effect of insulin, that is a hypoglycemia, because of two reasons. Sympathetic symptoms, okay, because of the hypoglycemia क्या क्या होगा? hypoglycemia मतलब less blood sugar. आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज नहीं है. हाइपोग्लाइसेमिया कौन करेगा? इंसुलिन. सो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि डोज डिपेंडेंट होता है. जितना लग रहा है उतना अगर यूज किया इंसुलिन तो इट्स ओके, बट बहुत ज्यादा इंसुलिन लगा दिया आपने तो आपकी बॉडी का पूरा ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा एंड यू विल सफर फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया. सो हाइपोग्लाइसेमिया रिजल्ट इन द सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स? सो फर्स्ट सिंपैथेटिक सिम्टम्स इंक्लूड्स ड्यू टू रिलीज ऑफ एड्रेनालिन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, हंगर, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, पल्पिटेशन. आपको बेचैनी होगी, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, एंजाइटी होगी, आपकी वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, आपको हंगर, भूख लगेगी, स्वेटिंग होगा. देन सेरेब्रल सिम्टम्स, मैंने बोला है ब्रेन नीड्स ए ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, व्हाट विल हैपन? सो सेरेब्रल सिम्टम्स लाइक कंफ्यूजन, डिप्रेशन, कोमा, कन्वल्जेंस एंड सेरेब्रल एडिमा. ठीक है, अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं तो आपको चक्कर आएगी, आप गिर जाओगे, सेरेब्रल एडिमा, कन्वल्जेंस, कोमा, मतलब आपको इपिलेप्टिक अटैक भी आ सकती है. बॉडी में शुगर होना भी जरूरी है. शुगर हर टाइम बेकार होता है ऐसा चीज नहीं है. आजकल लोग क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं शुगर नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है. अरे भाई जिंदा कैसे रहेगा? शुगर नहीं खाया तो खाना है, लिमिटेड एक्सेस में खाना है. शुगर नहीं खाया तो मर जाएगा ना दोस्त. बिकॉज लाइफ चल किसके ऊपर रही है? शुगर के ऊपर. एवरी सेल ऑफ योर बॉडी नीड्स एनर्जी, एंड एनर्जी सोर्स क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. इफ देर इज नो ग्लूकोज यू विल नॉट सर्वाइव. सो अगेन unrecognized attack during the nights. Unrecognized attack during the night. So it is followed by rebound hyperglycemia with glycosuria in the next morning. It is known as SOMO-G effect. एक एडवर्स इफेक्ट क्या है इंसुलिन का? हाइपोग्लाइसेमिया. ठीक है, दूसरा क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड अटैक ड्यूरिंग नाइट. अटैक किसका? हार्ट अटैक नहीं, वही हाइपोग्लाइसेमिक अटैक. कब आएगा? मतलब कभी कभी ज्यादा हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल, कभी भी कम हो जाएगा. सो अनरिकॉग्नाइज्ड अटैक ड्यूरिंग द नाइट. सो इट इज फॉलोड बाय हाइपरग्लाइसेमिया विथ ग्लाइकोसूरिया इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. मतलब क्या होगा? रात को ही आपका ब्लड का शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाएगा और सुबह सुबह बढ़ जाएगा, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा. दिस इफेक्ट इज नोन एज SOMO-G effect. Frequent attack of hypoglycemia may cause neuronal damage.
बहुत देर तक, बहुत टाइम में ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, तो आपके नर्व को डैमेज होता है, ठीक है, नर्व, न्यूरॉन्स, बिकॉज न्यूरॉन्स आर totally dependent on the glucose for energy. Okay? Then retinopathy may be worsened with the repeated hypoglycemic, then insulin lipodystrophy मतलब क्या, जो जहाँ पे साइट ऑफ इंजेक्शन है, जहाँ पे आप इंजेक्शन ले रहे हो, वहाँ पे क्या होगा, एट्रोपी हो जाएगा। एट्रोपी मतलब हाइपर, वहाँ का जो टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, वो डेवलप हो जाएगा, प्लास्टिक, मतलब हाइपर प्लास्टिक हो जाएगा। तो हाइपर atrophy or hypertrophy of that tissue at which there is a injection of insulin, जहाँ से इंजेक्शन लेते हो ना आप, वहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन क्या करता है, हाइपरट्रॉफी करता है। हाइपरट्रॉफी मतलब ज्यादा उसको बढ़ा देगा टिश्यू को, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सो साइट ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी चेंज्ड रूटीनली। तो एक ही जगह पे इंजेक्शन नहीं लेते रहना है पूरा जिंदगी भर, वैसे क्या होगा, फिर बाद में वहां से एब्सॉर्प्शन कम होगा। So due to, as insulin induces the lipodystrophy, hypertrophy of subcutaneous tissue, so you have to change the injection site frequently. कभी इधर लिया तो दूसरे टाइम पे बीच में ले लो, नाभि से नजदीक ले लो, ऐसा चेंज करना है because of adverse effect. Insulin causes the lipodystrophy. So it is a two type of lipodystrophy. So first one is lipo hypertrophy. Hypertrophy due to lipogenic property. तो लिपोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है, ये लिपिड्स का सिंथेसिस बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि सरप्लस ग्लूकोज जो है वो लिपिड, इंसुलिन, सो लिपोजेनिक प्रॉपर्टी, इंसुलिन स्पॉन्जी लम्स, जहाँ पे आप इंजेक्शन ले रहे हो, स्पॉन्जी लम्स मतलब गांठ गांठ, गुठिया बोलते हैं उसे, तो गुठिया डेवलप हो जाएगी। स्पॉन्जी लम्स डेवलप्स एट द साइट ऑफ इंजेक्शन if insulin is used frequently, so you have to change the site of injection. दूसरा होता है लिपोडिस्ट्रोफी, लिपो, दूसरा होता है लिपो एट्रोपी। पहला होता है लिपो हाइपरट्रोफी, दूसरा होता है लिपो एट्रोपी। हाइपरट्रोफी मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्ट टिश्यू उसको बढ़ा देगा प्रोडक्शन। लिपो एट्रोफी लॉस ऑफ फैटी टिश्यू, लॉस ऑफ फैट टिश्यू, इम्यूनोलॉजिकल ओरिजिन, लिम्फेटिक टिश्यू जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए। In visual accommodation disturbances, neuropathy, they are associated with the insulin use. Obesity, edema, hepatomegaly. Hepatomegaly मतलब क्या? लीवर का साइज बड़ा होगा। edema मतलब क्या? सूजन। Obesity मालूम है आपको। Uses of insulin, क्या यूज होगा उसका? Obviously, it is used in the treatment of idiopathic diabetes mellitus, secondary diabetes mellitus, and glycosuria. Glycosuria मतलब अगर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो इंसुलिन इंट्रावेनस ड्रिप इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरकैलेमिया। बहुत ज्यादा अगर पोटेशियम लेवल है तो हाइपरकैलेमिया। ग्लूकोज पोटेशियम ड्रिप हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट द पेशेंट विथ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कंप्लीट complicated by arrhythmia due to hypo uses हो गई। नाउ इंसुलिन मिक्सचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इंसुलिन कितने कितने टाइप, सो फर्स्ट इज नथिंग बट द कन्वेंशनल मिक्सचर, कन्वेंशनल मिक्सचर, पुराने वाले कन्वेंशनल मिक्सचर। सो उसमें क्या आता है, लेंटे इंसुलिन, लेंटे इंसुलिन, इट इज कमर्शियली अवेलेबल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्ट्रा लेंटे एंड amorphous, ultra lente and amorphous lente, that is known as semi lente. Insulin zinc preparation 3:7, लेंटे इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, डिफरेंट टाइप का होता है, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड स्लो, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो आपने देखा है जो नेटिव इंसुलिन है ह्यूमन का, सो दैट हैज अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, 3 to 5 मिनट, दैट इज अ वेरी रैपिड एक्टिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसुलिन प्रिपरेशन, पहला है लेंटे इंसुलिन, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन दैट इज अल्ट्रा लेंटे, क्रिस्टलाइन जो होता है वो अल्ट्रा लेंटे होता है, एंड हमारे पास जो होता है वो सेमी लेंटे होता है इन द 3:7 proportion। सेकंड होता है आपका इंसुलिन प्रिपरेशन, प्लेन इंसुलिन विथ नेचुरल पीएच, ओके, प्लेन इंसुलिन प्लस नेचुरल पीएच। सो प्लेन इंसुलिन विथ न्यूट्रल पीएच, इंसुलिन preparation is not stable, this preparation is not stable and must be prepared immediately, और must be prepared immediately मतलब क्या, फ्रेश प्रिपेयर करना है। सो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, which insulin preparation should be freshly prepared before injecting into patient। तो ये है प्लेन इंसुलिन प्लस मिक्सचर ऑफ प्लेन प्लस न्यूट्रल पीएच इंसुलिन। तो ये अगर है तो यू हैव टू प्रिपेयर, you have to prepare, or patient has to prepare before the injection, or nurse has to prepare
दिस सॉल्यूशन फ्रेशली बिफोर इंजेक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा इंजेक्शन फ्रेशली प्रिपेयर करना है? प्लेन इंसुलिन प्लस that natural pH insulin mixture, so that should be prepared freshly before injection. And what is that? It is a highly purified and it is a highly purified monocomponent insulin. तीसरा आता है आपको प्लेन इंसुलिन प्लस प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन. प्रोटामाइन जिंक will increase the duration of action of insulin. तो ये इंसुलिन स्लोली रिलीज करता है. तो मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय द पेशेंट बिफोर इंजेक्शन. अगेन प्लेन इंसुलिन जिसमें भी आएगा, प्लेन इंसुलिन नॉर्मल इंसुलिन जिसके साथ में भी देंगे, तो प्रिपरेशन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड. प्लेन इंसुलिन इज कंबाइंड विद द प्रोटामाइन जिंक टू अल्टर द फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब फॉर ड्यूरेशन. इंसुलिन प्रिपरेशन इज नॉट स्टेबल एंड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बिफोर यूज, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर करना. नाउ नेक्स्ट इंसुलिन एनालॉग. अभी ये क्या है? ये नए वाले इंसुलिन एनालॉग. इंसुलिन एनालॉग. So this insulin differs from the amino acid to that of the human insulin, but binds to the same receptor and acts like native insulin. इंसुलिन एनालॉग जो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस में. जो नॉर्मल इंसुलिन है ह्यूमंस का, उसमें और इसमें थोड़ा सा एक दो अमीनो एसिड का डिफरेंस होगा, बट वो अमीनो एसिड वो इंसुलिन भी सेम ही रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होता है एंड वही एक्शन करता है. सो इंसुलिन एनालॉग. फर्स्ट वन इज नथिंग बट द लिस्प्रो इंसुलिन. लिस्प्रो इंसुलिन. लिस्प्रो इंसुलिन क्या है? इट इज हेक्सामर. हेक्सामर. आपका नेटिव इंसुलिन क्या है? मोनोमर. नेटिव मतलब ओरिजिनल इंसुलिन क्या है? प्लेन. दैट इज secreted by pancreas in the form of monomer. Lispro क्या है? Hexamer. That's why it is a longer acting. Right? So which dissociate into monomer and duration of action is around 4 to 5 hours. It is more effective in reducing the postprandial rise in the blood. खाना खाने के बाद में जो ब्लड शुगर बढ़ता है, उसको रिमूव करने में, उसको डिक्रीज करने में ये इफेक्टिव है. इंसिडेंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, इंसिडेंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन इज लोअर. मतलब जो नेटिव इंसुलिन है वो रैपिड एक्टिंग होता है, फास्ट एक्ट करता है, जल्दी हाइपोग्लाइसेमिक का. ये जल्दी नहीं करेगा, ये धीरे धीरे करेगा, मतलब धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल. इंसिडेंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन इज लोअर. एस्पार्ट इंसुलिन. नेक्स्ट होता है एस्पार्ट. ये होगा लिस्प्रो. So aspart is a short acting and has properties similar to the lispro. It is injected subcutaneously before 5 minutes of commencing the meal. खाना खाने से पहले 5 मिनट पहले इसको इंजेक्शन लगाना है. एस्पार्ट इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट में. नाउ तीसरा होता है ग्लार्जिन इंसुलिन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. सो इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग. क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्गर एक्टिंग है. ग्लार्जिन इंसुलिन इज अ लॉन्ग एक्टिंग. ग्लार्जिन नाम है इंसुलिन के प्रिपरेशन, इंसुलिन के प्रिपरेशन के नाम है. Okay, so duration of action is around 20 to 24 hours. Absorption is uniform. Not okay. Not produce insulin plasma peak repeatedly. Provides prolonged and continuous low plasma insulin concentration, and also does not cause hunger due to hypoglycemia between the meals. Slowly release करता है इंसुलिन, तो ज़्यादा रिलीज होगा तो ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया होगा. हाइपोग्लाइसेमिया ज़्यादा होगा, आपको भूख लगेगी. स्लोली रिलीज करता है, एकदम लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं. इसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया कम करता है एंड इट विल नॉट कॉज हंगर ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया ड्यूरिंग मील्स. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. लॉन्ग एक्टिंग वाले याद रखो, अल्ट्रा लेंटे, डेटेमिर एंड डेग्लूडेक. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. डेग्लूडेक इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन. डेग्लूडेक इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग. क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर एग्जामिनर. क्वेश्चन बहुत बार आ चुकी है, आप पेपर देख लो, को याद ही रखना पड़ेगा. अगर स्लोली, बहुत ही स्लोली लूंगा तो कुछ भी फायदा नहीं, रैपिडली लेना पड़ता है. देखो लिस्प्रो क्या है? एग्जाम वर्क. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है? 4 to 5 आवर्स. ठीक है. एस्पार्ट क्या है? उसके जैसे है. ग्लार्जिन क्या है? लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग. लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन है? लॉन्ग एक्टिंग कौन है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग, लॉन्गर एक्टिंग अल्ट्रालेंटे, डेटिमिर, डेग्लूडेक. Out of the degludec, longest acting insulin. You can see over here again same thing. Rapid acting insulin preparation. कौन सा rapid acting? Lispro है, aspart है and glulicin है. Lispro, aspart and glulicin, they are known as a rapid acting. Rapid मतलब quick acting. ठीक है. Rapid acting का मतलब क्या होता है? Quick acting. Rapid acting insulin preparation. What are the rapid acting? क्वेश्चन आता है, one of the following is not a rapid acting insulin preparation. रैपिड में याद रखो कौन है? लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन, GAL.
गल, अपन बोलते हैं ना क्या की गल है, GAL, और कैसे भी आप याद रख सकते, ये लेजी लैग और लेग, डिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसिन, दे आर नोन एज अ रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग मतलब इनका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, सो ओनली onset ऑफ एक्शन देखो 15 to 20 मिनट, 15-20 मिनट में ये एक्शन दिखाएगा उसका। ड्यूरेशन कितना है, 3 to 4 आवर्स, एंड प्रेजेंट एज अ मोनोमर। डिस्प्रो इंसुलिन प्रेजेंट एज एस्पार्ट में क्या है, 3 to 4 आवर्स अगेन उसका ड्यूरेशन, and it is the most rapidly acting aspart. Now short acting, regular insulin, crystalline zinc insulin, regular crystalline zinc insulin, it is a short acting. कितना टाइम है, onset 3 to 60 मिनट, यहाँ आप देखो onset टाइम बढ़ गया, ड्यूरेशन भी 5 to 8 आवर ड्यूरेशन बढ़ गया। इट कैन बी irregular insulin which can be given by IV, ओके, बस वही इंसुलिन है जो इंटरनेसली देते हैं, बाकी सब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। Regular insulin or crystalline zinc insulin is given by intravenous route in case of emergency, and other insulin preparations they are given by subcutaneous route, याद रखना है। शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर एंड सेमी लेंटे, सेमी लेंटे। नाउ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन है, देखो इंटरमीडिएट एक्टिंग नेचुरल पीएच इंसुलिन, और नेचुरल पीएच इंसुलिन इज आल्सो नोन एज आइसोपिन इंसुलिन एंड लेंटे इंसुलिन, ये क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है। सो वन सेट ऑफ एक्शन देखो 2 आवर्स, मतलब अभी लिया तो अभी इमीडिएटली हाइपोग्लाइसेमिया नहीं करेगा, मतलब अभी इमीडिएटली शुगर लेवल नहीं कम करेगा, 2 आवर्स के बाद में उसका एक्शन चालू हो जाएगा। इट विल लास्ट फॉर 16 to 80 आवर्स। देखो इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन सी, तो 16 to 18 आवर्स और 16 to 20 आवर्स इन केस ऑफ लेंटे। नाउ लॉन्गर एक्टिंग देखो, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, सो अल्ट्रा लेंटे, ग्लार्जिन, टेटेमिर एंड डेग्लूडेक, अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन प्रिपरेशन और अल्ट्रा और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। लॉन्ग एक्टिंग में कौन आता है, अल्ट्रा लेंटे, UGDD, याद रखो। सो इट विल एक्ट फॉर अराउंड, अल्ट्रा लेंटे विल एक्ट फॉर 20 to 36 आवर, ग्लार्जिन विल एक्ट फॉर 15 to 24 आवर्स, डेटेमिर 20 to 24 आवर्स एंड डेग्लूडेक, यहाँ पे देखो डेग्लूडेक कितना है, 20 to 40 आवर्स, 20 to 40 hours. That's why degludec is the longest acting insulin preparation. Question इसके ऊपर आ चुका है, longest acting insulin preparation, degludec। इसको 4 बार अंडरलाइन किया है। You have to remember this. There is no other option. Okay. Now we have seen about the insulin. Insulin के बारे में देखा है। So insulin is given by parenteral route, not by oral route. Now next part is nothing but the oral and